Well, anyways, Hmm. fine. So if you have read this Aarti, right, so what you have understood, right, they are talking about some elections in a particular country, right? What they say, there is a country called Bavaria, right? And what is happening? There is a big political parties that we call it as a CSU, right? So what happened actually? It lost a lot of votes, like in the state government. It had a majority in the state government. It lost a lot of votes in that, right? Okay, and this happened not, not for this, but there was some other party as well that they call it as SPD, right? They also performed badly in the election, right? So they're talking about two parties first. One party was CSU, right? And the other was SPD. Both lost in the election, right? So what they're telling, the decline of SPD was why? Because it aligned with a different party, right? That was kiski party thi wo? Angel Markovsky, right? In a coalition government, right? For example, let's suppose uh, in a state election is being held, right? And there's a party, it is uh, taking coalition with some other party which people do not like, right? For example, I can talk about the Bihar, right? In Bihar, what happened? BJP was doing coalition with JDU, right? JDU से किया था ना? हाँ. So what happened na? Their vote percentage of JDU got declined, right? So my point is na ki this is one of the reason why that party lost, because it went with coalition with the government which with a party which most of the people do not like at all, right? Okay. But then again, the Hmm. author is coming up. This was not the bad news, right? It was not all the bad news. Then he talked about other party that was Green Party, right? That was, that was seen as an alternative to SPD. For example, let's suppose Congress and BJP are fighting in the election, right? And BJP lost, even though Congress lost, right? So this would not be a bad news for the BJP. Why? Because the party which you are seeing as an alternative, right? That is also lost. They also lost in the election. That won't be happening. But I'm just putting my point, right? This is what is the author is trying to tell in this particular passage. Okay. Hmm. And now Okay. they talk about a far party, that is what? AFD thana shayad? Yes. Hmm. There was, he talked, in the passage, he's talking about all the four parties, that was AFD. It also did not perform well. So what the author is trying to tell, all the big parties which were present there for voting as well, right? Who participated in the election, all the four parties did not perform well as it was expected by them as well as by the people, right? Fine. Hmm. Hello. Now, at the Yes. end, he talks about, this one, Angel Merkel party ke bare mein, right? Ki Angel Merkel party and the SPD, they lost, what we say, support for different reasons, right? Fine. And what was the reason? It was for the asylum seekers in 2015, Hmm. right? What he did now, he provided asylum to some people, in 2015. For example, let's suppose in your country, you are already suffering from a lot of things, right? I'm just putting a case, right? And what happened now, there were people, all of a sudden, a little bit, 100 or 200 people come in your country, and there is a government, he's providing asylum to them, So what would happen? Obviously, it will upset some people. What is the reason behind that? Because now the resources has to be distributed among these 100 people as well. Right. So this was one of the reasons why the people got upset and why they did not vote for this particular party. Which was that party? Angel Merkel party. That was SPD. Hmm. Merkel was right. Yes. Or SPD. What was the issues? What issues with SPD? SPD. The issue with SPD was that it aligned with the party which the people doesn't like. Okay. Hmm. Hello. How? So what happened? He at the end he suggested that there's a chance that SPD will might, what we can talk leave the coalition, right? And due to this, what would happen? It will lead to a new election. Hmm. Hello. Yes. And at the end, what he is concluding by saying, what he said, the uncertainty that is present, right? It is causing a lot of talk about Merkel stepping down as a leader of her party, right? Hmm. Hello. And what he's telling, ki her likely replacement, like whatever the replacement would be coming for her, right? It might not change much for the party future, है ना? How? ठीक है? Let's move to the question. The passage suggests that SPD may not have. See, read the question properly. What they're telling. The passage suggests that SPD may not have suffered. Right? May not have suffered a Hmm. major loss in Belarus if. So what the question is asking? मतलब मेजर लॉस कब नहीं होता?
अलायंस नहीं होती right? तब नहीं होता। हाँ, तो when it would not be that, when it should not have ऑप्शन alliance with वन। CDU. यस। तो ऑप्शन वन विल बी द राइट आंसर। बाकी करके तो आए नहीं है sir, तो मैं बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ में क्यों ही जाऊं, राइट? अगर सेकंड में हम्म। पढ़ते भी हैं, दे हैव एंटर्ड अ कोलिशन विद सीएसयू। भाई सीएसयू वाज द पार्टी दैट वन द इलेक्शन इन बेवरा ना, हेलो। एंड ही इज नॉट टॉकिंग हम्म। अबाउट द कोलिशन विद एसयू एट ऑल, राइट? पूरे में उसने कोलिशन ऑफ सीएसयू के बारे में तो ही इज नॉट इवन टॉकिंग एनीवेयर, ठीक है, यस। राइट? और थर्ड क्या बोल रहा था, इलेक्शन रिजल्ट वेर इन अकॉर्डिंग विद द ओपिनियन पोल। भाई ओपिनियन पोल जो उसने मेंशन किया था, राइट, उसने इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट एएफडी के बारे में दिया हुआ था, राइट? इट ओनली टॉक्ड अबाउट हाँ। एएफडी, देयर वाज नथिंग मेंशन्ड अबाउट एसपीडी, बट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट एसपीडी, एसपीडी। राइट? हम्म। Fine. And what is the fourth? Various events across Europe did not have a negative impact. But see, there was some impact, because of that, there might be the reason, why, what we say, CDU defeat was there, right? But the हम्म। impact was on what? CDU के ऊपर था ना, right? Hello. The impact was for the CDU, not with the SPD, right? So you can't. For example, if I'm in coalition हम्म। with JDU, right, and they're telling the people are not voting for JDU, or for example, let's suppose AAP party, right? People are not voting for the AAP because Kejriwal went to jail, right? So even if Congress is हम्म। getting alliance with the AAP, right? So we'll tell कि Congress got defeated because it alliance with the AAP. They won't sell because of Kejriwal, because people does not like Kejriwal, right? You can't say that. That is the implication, but that is not related to Congress losing the what we say election, right? Hello, हम्म। fine, यस। ठीक है. Second question. The author apparently takes the view that CDU losing the election. What it will do? He विल बी says, I guess, डेट्रीमेंटल टू रुक, यूरोप। Europe, that's what, right? Wait. He mentioned something, na? In starting, wait. हाँ, there is a chance. ये रहा ना, ये वाला, ये this line, right? हाँ। There is a chance that collapse of Mr. Merkel government is only weeks away, right? With हम्म। gloomy consequences of continental grappling with Brexit, यस। right? And incipient Italian drive new Euro crisis and never more candidates Russia, right? So what is telling that consequences is gloomy, हम्म। right? So what he's trying to tell, what the author is trying to see, directly they have not mentioning it out, right? But it's if you understand the question, right? This is an interference based question. What I mean by saying that, the exact word you won't be finding it out, but you have to relate, okay, fine, from which line the author is trying to talk on this particular topic. Fine. Hello. यस। Right. So when he's talking about the gloomy part, right? What he's trying to tell, that CDU losing the election will be detrimental in Europe as well. बोल रहा है ना? Brexit न्यू यूरो in Europe. क्राइसिस बोल रहा है, हाँ। न्यू यूरो क्राइसिस, राइट? तो दैट विल इफेक्ट हम्म। यूरो क्राइसिस। अब क्या मतलब, कहीं और तो होगा नहीं, राइट? हेलो, यूरोप में तो इफेक्ट करेगा ना, राइट? हेलो, हाँ हाँ हाँ। यस। फाइन. सो विल गो विद हम्म। ऑप्शन वन. ऑप्शन वन। सेकंड भी पढ़ लेते हैं, वैसे डायरेक्ट है, मतलब इफ यू हैव अंडरस्टूड. इसके ओके. इसके मतलब जो भी आंसर्स थे ना, मतलब मोस्टली डायरेक्ट ही थे, मतलब इतना डीपली नहीं थे। और दूसरा कह रहा है इज इनकॉन्सिक्वेंशियल टू द फ्यूचर ऑफ यूरोप. भाई कॉन्सिक्वेंशियल है, नॉट इनकॉन्सिक्वेंशियल नहीं है, राइट? हेलो, उसने आईएन यूज हम्म। कर दिया, राइट? थर्ड विल रिविटलाइज यूरोप. ही इज टॉकिंग अपोजिट अबाउट इट, राइट? इसका अपोजिट बोल रहा है वो. व्हाट द ऑथर इज टेलिंग, राइट, दिस इज द अपोजिट ऑफ इट, राइट? तो ये भी फॉल्स है. और हाँ। लाइक विल रिजल्ट इन नो डील ब्रेक्सिट. भाई द इम्पैक्ट ऑफ द डील विद ब्रेक्सिट, they are not talking about there will be no deal or yes deal, right? He's not talking about what impact will be on Brexit because of this particular thing that is happening. Hello, हम्म। he just said what, कि Europe is dealing with Brexit currently. He just talked about this particular thing. He's not talking about whether whatever they will be doing that will be affecting the Brexit or not, right? Hello. सही है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया एक तरीके से। So we'll go with which option first, ऑप्शन फर्स्ट। right? Modern Germans are the least likely to vote for candidates. बोला तो है उसने ना.
We talk somewhere यार. हाँ ये रहा ना. Modern Germans have an understable a version of charismatic leader, but Mr. Kram Kervin will test even them. चलो. What do you mean by charismatic leader? अ, मतलब Exercising a compelling calm, right? हाँ। जो आपके में charm हम्म। रहता है, right? Which will what हाँ it will हाँ do? हाँ। It will inspire the other people who are following it out, right? हम्म। यस। है ना. तो you have to need to find out the option that is talking about charismatic leader, right? हम्म। कौन सा है? Who are highly rational अच्छा, and deliberate in their अच्छा, style. करिश्मेटिक वाला। हम्म। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा ना. तो इसका अपोजिट है ना. मैंने टू लगाया था। क्या लगाया था? टू टू। टू. ऑप्शन टू। who uses their authority to demand high performance. भाई तो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट होगी ना फिर. हाँ, नहीं ऑथोरिटेरियन करिश्मेटिक लीडर बोल हो रहा जाएगा था। ना, जो अपनी हिज और दैट विल यूज हिज अथॉरिटी टू डू दैट, राइट. उन्हें तो चरम ये हम्म। वाला चाहिए ना. आई गेस फोर्थ ऑप्शन होगा इसका. हाँ, चार्म फिर तो एंड फोर फोर हो जाएगा। परजर्सनेस विल बी हम्म। देयर, राइट. ठीक है. यस। हाँ। सेकंड में तो अथॉरिटी वाली हो जाएगी ना. तो लास्ट तो डायरेक्ट है भी, तूने बोला डायरेक्टली है. डायरेक्टली में तो फिर उसने बोला ही है कि मॉडर्न जर्मन हैव अभी। एन स्टेबल अवर्जन टू चार्मिस्टिक लीडर, राइट. तो दे विल गो फॉर दैट लीडर ना हु इज हैविंग दैट पर्टिकुलर हाँ, कैरेक्टर तो विद देम, राइट. फोर्थ ही होगा। ज्यादा खुश हो ओके। गया था क्या? सारे आंसर हो रहे थे तो. पता नहीं। हाँ हो जाता है, कोई नहीं. हम्म। फ्रॉम द टोन ऑफ द पैसेज द ऑथर वुड बी. पहले उसका. इसका मैंने लगाया टू। फिर रुक जा, पहले पढ़ने दे थोड़ा सा हर को. फ्रॉम द ऑथर वुड बी लेस लाइकली टू एंडोर्स सीडीयू. भाई सीडीयू तो एंजल मार्केल की पार्टी थी, राइट, आई गेस, है ना. हाँ, तो ही उसके साथ ही टॉक्स तो अबाउट उसने द वो किया था ग्लूमी पोजीशन। कॉन्सिक्वेंसेज, राइट. ही टॉक अबाउट द ग्लूमी हम्म। कॉन्सिक्वेंसेज ना. कि if there is a loss हम्म। suffered by CDU, right? So he's not endorsing CDU, right? Less likely, हम्म। right? To it will not do, right? More likely to endorse CDU हो जाएगा ना. Not less, more हो जाएगा ना. हाँ। है ना. और second is more likely to endorse the Greens. Greens के बारे में where he has talked. ये रहा हाँ. The Greens who have become an economical. Hmm. Okay. Economical and political sensible center of party alternative to SPD with a much younger and more enthusiastic base of support got a huge boost. तो ऑथर इज हम्म। सेइंग कि ग्रीन इज एन सेंसिबल अल्टरनेटिव, राइट. तो उसको तो एंडोर्स करेगा ना. वही। तो टू. ऑप्शन टू आ जाएगा, हाँ। राइट. हेलो. यस। हाँ तो ऑप्शन टू. हम्म। थर्ड क्या है? मोर लाइकली टू एंडोर्स एएफडी. नहीं ये तो फॉल्स है यार. हम्म। राइट. बोलता है ना द ग्रीन्स बिकम अ सेंसिबल अल्टरनेटिव टू एसपीडी, राइट, एंड टू एएफडी नॉट गेनिंग एज मच एज द पोल सेड इट वुड. ये बोला ना. हम्म। राइट. फोर्थ वाला ही बाहर हो जाएगा। टेरेबल न्यूज करके रेफरेंस दे रहा था उसका। हाँ तो दैट वुड मेक इट रॉन्ग. ठीक है. हाँ। तो थर्ड ऑप्शन आ गया ना. 17th. Each of the following is a reason of CDU losing its supporter to AFD except. Okay, which one is not? They're asking, right? Fine. The chancellor decision to admit asylum. ये तो correct है. Hello. This हम्म। is a reason, so this won't be the answer. है ना. यस। Second, the chancellor decision to bail out southern members of the euro. This was also correct. हम्म। कहता ना cash to bail out something he said ना euro में ऐसा he said something. I still remember. He used that word. पैराग्राफ तो ये बोला था इसने। अब she said ना कि cash, cash to bail out prodigal or southern member of the euro. है ना. हाँ Right. So this हाँ is हाँ also हाँ। stated. So this also won't be the answer. हम्म। Or third, the chancellor popularity had a significant decline among German voters. तो अननोन था ना शायद, तो बताई कहाँ है इसने.
कहीं बोला है क्या ऐसा जर्मन वोटर्स पे? ट्रांसफर पॉपुलैरिटी। फोर्थ क्या, ऑल ऑफ द वो आर रीजन फॉर नो, थर्ड इज नॉट द रीजन, तो विच आंसर विल हम्म। बी करेक्ट? थर्ड। इसका थर्ड में इज फोर्थ नॉट को नहीं टॉकिंग। होगा इस वाले का? अबे फोर्थ क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ द वो आर रीजन फॉर सीडीयू लूजिंग इट्स सपोर्टर टू एफडी, तो थर्ड थोड़ी ना रीजन है। अरे हाँ यार, क्या कर रहा हूँ। हम्म थर्ड इज करेक्ट ना? थर्ड का मतलब ये है कि उसमें कुछ दिया नहीं है, थर्ड का वही चीज है ना। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। ठीक है। ये हम्म। सब बोर हो रहे हैं, ठीक है, क्या करना है, 18 19 20 कर दूं कि चला जाऊं सेकंड वाले पे? दो ही, दो ही तो है 18 और 19, वो भी वो वाले हैं सर। ऑड वन आउट है। 18 19 दो है ना, तीन होंगे बे, 20। 18 19 20 एक तीन मिनट, है। हाँ हाँ 23 है। एक में वो है, पैराजम्बल है। अच्छा। देख लो, मतलब शीट 2 पे जाना, शीट 2 पे चले। और उसमें मैंने 9 मतलब 9 तक ही की है और एक 15 वाला किया है। तो मैं ये 9 लोग ही पूरे तक करके करूंगा और आए हैं। डिस्कस पूरा होना करके आऊंगा, पूरा होना करूंगा, पागल और क्या, 22 तो ऐसे ही हो गया, मैं में इतनी हम्म। ताकत थोड़ी ना कि ये भी करूं, फिर उस पे भी जाऊं। एनीवेज ये कर हाँ तो। लेते हैं, पहले निपटा देते हैं भाई, पहले ही निपटा देते हैं, समझा, हम्म क्योंकि फिर एक ये हम्म, बच जाएगा। एनीवेज 5 सेंटेंस ठीक क्या है। है, ऑड वन आउट है क्या? ये वाला हाँ। ठीक है, एंड दिस आर रिलेटेड इन ईच अदर रेदर एज द ईयर इज रिलेटेड टू अ पॉकेट डायरी, द latter is a meaner, tidier, simpler version of the former. Comedy is the angle at which most of us see the world, the way that our light is filtered. There's a comedy, and then there's something called comic novel. The novel is by large, secular comic uh, form. One was suspicious for any serious novelist who seems to be meaning to them. The late Philip Roth was rightly praised by his humor. हाँ, फिफ्थ है क्या आंसर? मेरा तो इसमें, एक मिनट, कौन सा रहा था मेरा? मेरा फोर्थ वाला आया था, 2315 बन रहा था। 2315 का थ्री पहला जाएगा, 3124 बनेगा। जो फिफ्थ है, फिफ्थ तो बिल्कुल अलग टॉपिक बात कर रहा है, फिफ्थ इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम राइट इन कॉलिंग समवन अ कॉमिक नोवेलिस्ट, राइट? हेलो, हम्म हम्म कि व्हाई यू आर कॉलिंग राइट, और बाकी पढ़ तू पहले, लेट्स स्टार्ट विद थर्ड वन, राइट? देयर इज अ कॉमेडी एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉमिक नोवेल, राइट? दे आर टू डिफरेंट थिंग, राइट? हाँ। ठीक है, यही ना फिर बोलेगा तू हाँ पहले? ठीक है। राइट, एंड this is 3 related के to साथ each वन। other rather as the year is related to a pocket diary, right? The latter a minor, and हम्म this are related, which are related, the comedy and comic novel, हम्म। है ना? यस। हेलो, हाँ हाँ। ठीक है, थ्री फिर वन क्या बोल तक तो रहा आ है, गया एंड, था। हाँ ठीक है, फिर हम्म कॉमेडी इज द एंगल एट विच मोस्ट ऑफ अस सी द वर्ल्ड, द वे दैट आवर लाइट इज littered, right? And the novel is by and large a secular comic form. One has can be suspicious of any serious novelist who seems entirely immune to the comic. तो दोनों को एक्सप्लेन कर रहा है ना कि what is difference between comedy and the novel, comic novel. अच्छा। 2 से अच्छा मैंने अच्छा क्या, क्या 2 कर से रहा है बिगिन कर दिया था। नहीं, 2 से भाई? बिगिन कर दिया था मैंने कि भाई कॉमेडी का एक एंगल एक बताना मिनट, है। देयर इज अ कॉमेडी एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉमिक नॉवल, राइट? यू विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक ना, वो जो हाँ। कॉमेडी की बात कर रहा है दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम इंट्रोडक्शन ना, कि तो पहले कुछ ऐसा बोल देगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पीयूष, देयर इज समथिंग कॉल्ड, व्हाट यू से, नो, पीयूष इज वेरी गुड बॉय एंड ऑल, फिर उसके बाद रितेश इज समथिंग अ गुड बॉय और समथिंग लाइक दैट। यू विल टॉक फर्स्ट ना कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पीयूष, देयर इज समथिंग कॉल्ड कृष्णा, we'll go with like this now when I have हम्म to talk about someone. If you're explaining me about you and your Krishna comparison, right? So what you will tell? To whom you are comparing with ना? First you talk about that कि पहले तो अपनी बात कर देगा कि मेरा नाम पीयूष है और मैं छठी क्लास में पढ़ता हूँ, ऐसा। You won't say like that, right? You first state ना कि to यस। whom you are comparing with, right? और how you go with fifth, that still I don't know how you selected the fifth as a part of it. The when they are talking about the difference when you read one and fourth, right? Sorry, हम्म second and fourth. So second is talking about the comedy, what the comedy is actually doing, right? And the fourth is talking about what the novel is actually doing. भाई तो डायरेक्ट था, अच्छा। दिस वाज वे टू डायरेक्ट यार। अच्छा करता है ना, फिर तो ओके। बताऊं तेरे को मैं भी अच्छे से। क्या बोलूं? हाँ हाँ, क्या ही बोलेगा तू, सही बात है। ये क्या है, भी ऑड वन आउट है? हाँ, 19 वाला भी ऑड वन आउट है। ठीक है। John Locke, a generative generation later, developed an entirely different notion of the basic nature of humankind, which he saw as innately good. तो फर्स्ट से स्टार्ट कर देगा, राइट? फर्स्ट से स्टार्ट कैसे हो जाएगा? है बे,
बाकी सब क्या पढ़ रहा है, जरा पढ़ना एक बार सारा पढ़ ले। पहला बोल रहा है ही हाँ फ्लेड, फिर Locke had ठीक है। witnessed the uprising. John Locke ultimately हाँ enjoyed a favored position at court after two were invited to invade England and assume the throne in 1688. While attending Oxford in 1666, he became friends. हाँ। तू किससे स्टार्ट करेगा? मैं क्या, देखो इसका, देखो पूरा नाम तो मुझे कोई सेंटेंस में मिला नहीं। एक ठीक है, मिनट, उसमें एक मिनट, कंफ्यूज जस्ट रहा कि लेट मी टेल यू इंट्रोडक्शन वन नहीं हो थिंग, पा रहा। लेट मी टेल यू वन थिंग, राइट? हम्म। If you read all हम्म। these things out, right? ठीक है, it's हम्म। talking about Locke, यस। right? Then he's यस। talking about his हाँ। escape to Netherlands, right? And his stay at two courts. That was what we हम्म। say, मैं क्या नाम है इसका, मैरी ऑफ ऑरेंज एंड प्रिंस विलियम्स, हम्म। सॉरी विलियम हाँ एंड मैरी, राइट राइट फाइन, हाँ ठीक हाँ। है, हम्म। राइट। नाउ यू इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, तो फर्स्ट आई टॉक अबाउट लॉक ना, कि हु वाज हाँ, लॉक जॉन लॉक की एंड बात व्हाट होगी। वाज द हम्म। नोशन ऑफ मेन काइंड, राइट? हम्म। तो यू स्टार्ट विद नहीं, फर्स्ट, समझ जा, तो जैसे फर्स्ट से थर्ड, तू स्टार्ट थर्ड, करेगा ना। नहीं, थर्ड जैसे कैसे, थर्ड लॉक हैज स्टेटमेंट है विटनेस्ड, तो उसमें थर्ड क्या तो ऑड पूरे वन उसको आउट हो बता जाएगा रहे हैं। भाई, थर्ड तो ऑड वन आउट हो जाएगा। हम्म। अच्छा तो ठीक है, वन से अपन ने बिगिन किया, फिर हाँ, वन से भी बिगिन, राइट, वन के बाद विल कम अप फिफ्थ। फिफ्थ, ठीक है। ही फिर टू फोर आ अटेंडेड यू नो, जाएगा इसके बाद। हाँ, उसके बाद हम्म। टू, हाँ। he fled to this and all, right? प्लेटो नीदरलैंड, मेट विद प्रिंस हाँ, एंड प्रिंसेस। और वहां हाँ कोर्ट फोर्थ में पार्ट, एडवांटेज मिल गया उसको। ये क्या बोल रहा है, जॉन लॉक अल्टीमेटली एंजॉय अ फेवर्ड पोजीशन एट कोर्ट हाँ। आफ्टर द टू वेर इनवाइटेड, राइट? हु आर दिस हम्म। टू? विलियम एंड मैरी ना, दे व्हिच वी विलियम हैव एंड टॉक्ड मैरी, इन यस। सेकंड, हाँ, यस। सो दिस विल बी 1524 ना। ठीक है। तो ठीक है बोलते हैं, आप गलती कैसे कर रहा है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। एनीवेज, 1524। ये क्या है, इसमें क्या करना है? उसी ये तो का वो है, पैराजम्बल है। जंबल, our modern equivalent, इसमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। The BBC Sports Personality of the Year award has never been under less pressure to justify its existence. Just spend a moment enjoying it all of what it was an experience. अभी रिकॉर्डिंग कर रहा था ना मैं, हाँ ठीक है, हो रहा है रिकॉर्डिंग, चल रही है। ओके फाइन फाइन फाइन, मैं भूल गया था, ठीक है। कहाँ थे हम? जस्ट स्पेंड अ मोमेंट enjoying it all for what it was, an experience unlikely to be repeated in the lifetime of anyone old enough to have taken it in properly. From the Etihad Stadium to the Allianz Arena, from the Champs Elysees to the Olympic Park, from Flushing Meadows to Twickenham, from the Middle Country Club to the Wankhede Stadium, the story of the year ran and ran. Just for a moment, set uh, aside the question of how all this may play out for future generations. Not everything has to be about legacy. In the Middle Ages, they would have commemorated such saga by setting the weavers to work on something that would have made the bag's tapestry look like a pamphlet. Our modern just spend. Let's. Oh, our modern. क्या किया है इसमें तूने? किससे स्टार्ट किया? इस इसमें मैंने वन से स्टार्ट किया है। Our और वन और modern. थ्री का पेयर बन रहा है। Our modern. One from the Etihad Stadium to the Lions. और मॉडर्न इक्विवेलेंट, तो वन से क्यों नहीं स्टार्ट किया? और हाँ, मॉडर्न वन से तो इक्विवेलेंट, किया है। अभी तो बोला तूने मैंने थ्री से किया है। नहीं नहीं, वन से किया है, वन और थ्री का पेयर बन रहा है, ये बोल रहा ओके, ठीक है, है ना? सही है वन क्या? थ्री सात हो गए, तो क्या है करे ना? यार इसमें, वन और थ्री तो सही है, हाँ। आगे फिर। इस इसके बाद फिर मैं गया फिफ्थ वाले पे। उन्होंने फिर बताया अगर मिडिल एजेस में ऐसी चीज होती तो क्या होता। ठीक है, ठीक है। वन से आई एम स्टार्टिंग, राइट? नहीं बे, क्यों? वाई वन। वन बात कर रहा है, हाँ अवर मॉडर्न इक्विवेलेंट, राइट? रुक जा एक मिनट, ठीक है। हम्म। तो वन एंड फाइव टुगेदर हो जाएंगे ना, इन द मिडिल एजेस, राइट? पहले तो मिडिल एजेस की बात करेगा। इन द मिडिल एजेस दे वुड हैव कॉमेरेटेड सच अ सेगा बाय सेटिंग द वेवर्स टू वर्क ऑन समथिंग दैट वुड हैव
made the Berwick Tapestry look like a pamphlet, right? Then you talk about our modern equivalent, right? So first you talk about in the Middle Ages, that should be like our modern अरे equivalent हाँ is यार, like क्रोनोलॉजी आ जाएगी। so ठीक है। 5 and 1 would be together, right? 5-1-1 आ ठीक है, जाएगा। 5-1-3 हो जाएगा। रुक जाए एक मिनट, 4 and 2 together, just for a हाँ। moment, right? Then 2 is talking about how you should savor the moment, right? हम्म। Just spend a moment enjoying, right? So we have now pair, अरे बहुत कंफ्यूजिंग मुझे भी कर रहा है एक मिनट, we have 5-1 and 4-2, right? ठीक हम्म। है, अब 3 को कहाँ सेटल अप करेंगे? नहीं तो From जैसे ये the आ रहा ना। Etihad Stadium to the Allianz Arena, from the Champs-Élysées to the Olympic Park, from Flushing Meadows to Twickenham, from the Medan Country Club to Wankhede Stadium, the story of the year ran and ran. Story of the year. हम्म। भाई तो हाँ, हो तो गया, थर्ड विल स्टार्ट ना स्टेटमेंट, थर्ड इट टॉक अबाउट स्टोरी ऑफ द ईयर, हेलो, सो व्हाट इज टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ अचीवमेंट, हम्म। हेलो, ठीक हाँ। है, तो फिर व्हाट इज दैट अचीवमेंट? द सागा, है ना? अच्छा, उल्टा हो रहा है थोड़ा सा। हमें स्ट्राइट हो रहा है, नहीं, थर्ड में उन्होंने अचीवमेंट बता दिया। फिर थर्ड जो बता रहा है अचीवमेंट है स्टोरी ना। ऑफ द ईयर, राइट? स्टोरी ऑफ द हाँ। ईयर, राइट? ठीक है, ठीक एंड है व्हाट इज दैट उस। स्टोरी ऑफ द ईयर? That in the Middle Ages they would have committed such a saga by setting the weavers to work on, हम्म। right? फिर मॉडर्न में बताया, मॉडर्न इक्विवेलेंट क्या है। तो 3-5-1-4-2 होगा, पता है? 3-5-1 टुगेदर हो हम्म। जाएगा, स्टोरी ऑफ द ईयर है हम्म। ना, राइट? हाँ। और स्टोरी ऑफ द ईयर क्या है? सच अ सागा by setting the weaver up, right? So it would be 3-5-1-4-2, right? ओके। हाँ, और 4-2 पहले तो पता ही क्यों नहीं आएगा, राइट? नहीं क्योंकि वो तो 4 दिख में ही दिया, रहा है। हाँ, सो 3-5-1-4-2, हाँ। हम्म। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट पैस, नेक्स्ट शीट करते हैं। हम्म। ओके, ओके, ये कॉम्पिटेंस वाला है क्या पहला? हाँ, कॉन्फिडेंस वाला है। ठीक है, हाँ, ओके फाइन। So, in this passage, what the author is telling, कि competence is a foreign policy, right? What does it mean? That being good at what? At making smart decisions that do what? That benefit your country in the global arena. Hello. What it involves? It involves a knowing about a lot of the world and then choosing the right goal. Hello. And for that, हम्म। choosing that goal, you should have skills to achieve that particular thing efficiently. है ना? Hello. Then what they ओके। talk about? They talk about USA, right? Ki USA is seen as a competent in foreign affairs. And what was the reason behind that? Its success in World War II. हम्म। Then second thing, यस। what he did, he created a international institution, right? And then after that, what he managed? He managed the Cold War. But after that, the things were worse. And what was the worst? When Trump came into charge. Hello. When Trump came in charge, there was a lot of blunder that happened. And what were the blunders? First one was what? Ignorance-led decisions, right? That was Trans-Pacific Partnership pulling. Hello. Then हम्म। Paris Climate Accord that affected what? That hurted the country as well as the economy of the USA. बोल तो रहा है ना यहाँ पे यूएस पोजीशन इसमें, दिस लाइन, दिस पैराग्राफ, राइट? हाँ। Now what happened to other countries? What they now they what they are seeing US as incompetent, right? As they are हम्म। less likely to listen to its advice,
or follow the lead of the USA. Now, China is covering all these things, right? Then at the end, what he's telling, ki even, USA is still powerful, right? Hello. But its allies, adversaries, they all are becoming more cautious when they're dealing with it, right? And they are talking about example of France and Canada. They are showing respect. Hello. But they know that Hmm. they cannot rely much on Trump guidance. Why? Because it's like a being in a room with a danger animal, right? He talks this na. बोल रहे हो ना? ड्रंक राइनोसोरस, हाँ। ड्रंक डायनासोर। ठीक है, क्लियर है ना? इजी है, तो डायरेक्ट है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। कॉम्पिटेंस के बारे में बात कर रहा है, पहले यूएसए वाज वेरी कॉम्पिटेंट, इट क्रिएटेड। नया लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है? ये एक्सपायर हो रहा है। आई एम सेंडिंग अ न्यू लिंक, राइट? देन विल डू दिस, वेट अ मिनट।